Good evening, everyone, and welcome to today's session on JavaScript. Himanshu sir, I think we can start, or we need to wait for another 5 minutes so that the number of participants can increase. Let's wait for a couple of minutes. Sure. Yeah, I think students are joining. Okay. Yeah. Okay, hi everyone. So I think we should start now. It's 5:37 already. I'm sharing my screen, just a minute. So guys, is it visible? Okay, cool. Okay, so we'll follow the same process, like we'll do 5 minutes or maybe 10 minutes of quick revision. Then we'll pick our new topics, right? So I have like yesterday's class replayed. So yesterday we covered like what are brackets. We had three types of bracket we generally use in web development. Those are parentheses, curly braces, angular brackets, right? Normal parentheses are used to invoke a function, and it's also used in syntax of function and if. Curly brackets are used to create objects that we will see today, like because we are going to learn objects today. And to make a multi-line of block of code, like for example in case of functions, or like in case of let, it decides like what will be the scope of let just because these curly brackets, right? And angle brackets are used in HTML, right? Then we learned about hoisting, like hoisting is a phenomena so that we can use variables even before declaring it, right? So we had a couple of examples, like we were consoling the value of a even before declaring it, and we were not getting any error. It was just because of hoisting, right? Then the reason of hoisting was like a JavaScript program runs in two phases, creation phase and the execution phase. So in creation phase, it searches for all the variables and functions and declare it beforehand, but the initial value of variable will be undefined. In case of function, it will be whole function, right? So these are the topics that we learned yesterday, and we also talked about scope. Scope is the area in the code where a variable is visible or accessible. Then then we had a couple of example of local scope and global scope. And the end when we finished our class with the difference between let, const, and var. So if anyone has any doubt in yesterday's class,
or if you did some assignment or studied about these topics and you're facing some issue, just ping me. Otherwise, we can proceed, right? Okay, so let me create a new file. Okay, so yesterday we covered about functions, and there was one more topic left, like arrow functions, right? So let's quickly see like how we can create a function. Function is like if we are creating a function, and after that we need to give a function a name. It can be anything, but it should be like logical. So let's say like I'm giving simple sum, so that I know that okay, this function will add two numbers or something like that. So this is how we created a function, right? And if we need to set the parameters, we just need to give variables and separate it by commas a comma b. Then it will accept two parameters a and b, and we can use that a and b inside this particular block of code, right? So there was one more way of writing a function, like using function expression and function statement. There were two methods, two types. So for example, let's use that now. Mm, uh, I am giving a name new function, and after that I'm using a function keyword, and it is accepting two parameters. Or let's change the name to new sum function. Right. Both of these functions will work exactly in the same manner. Okay, let's create one. Result is equal to very simple thing. I think we have done this a lot of times now. Same will go inside this. Okay, so there is one difference between writing this kind of function and with the variables, like creating an anonymous function and assigning it to a variable name and using that as a function. Like for example, if I do sum 4 comma 5 and new sum function 5 comma 6. So yeah, I know the output. Like if I call some function, it will just add to these two numbers and will print the result. For example, like in this case, it will be 9, and in this case, it will be 11. Okay, no problem. That's fine. 9 and 11. But if, yeah, I'm asking one question to all of you, so just listen it very carefully. The question here, it is working exactly same, but if I cut these two lines of code and pull it over, let's say in the beginning of the code, and when I try to run this code, like I'm getting like 9 from this 4 plus 5, plus in case of new sum function 6 plus 5, it should print 11, but I'm getting one error. Just can you let me know like why we are getting this error? We have two functions, we define two functions but in a different way, and we are calling these two functions because using the let. Okay, okay, yeah, that's good.
Okay, what if, Akshay and Shashank, like, what if I remove this let and change it with the where? Then it will work, yes or no? Quick answer, like whatever is coming in your mind. So in this case, if I try to run, I'm not using let, like, still I'm getting one error, like newsum is not a function. So I removed like it's stored in variable. Okay. Akshay pinged like it's stored in a variable. Yeah. So like this is the one difference between the defining the function in these two manners, like function expression and statements. And now we can know like why we are getting this error, because yesterday we studied about hoisting. So what was a hoisting? Like I told you, in hoisting for in case of creation phase, right? It will search for all the variables and the functions which are declared directly like this. For JavaScript, it's just a variable, right? So it will search for all the variables name, and it will be like, okay, we have new variable name, new sum function. So it will declare that even before in the creation phase, it will store a memory for this particular thing, but the initial value will be undefined, not a function, right? Because it is just similar to like other variables. If I create a variable a is equal to 10 and try to use it before, the value will be undefined. So for this particular scenario, like if I declare a new sum function variable, for JavaScript, it's just a variable, right? So in case of hoisting or in case of creation phase, the initial value will be undefined only, not a complete function. But if I'm declaring a function in a standard way, like I'm just writing function then function name, in that case hoisting will work. The JavaScript engine will know, okay, we are getting a function, so I need to store the whole function. But in case of variables, it will say, okay, I am declaring a variable name. I know like new sum function is a variable, but for now I'm not storing any value. The initial value will be undefined, and because we are using it before declaring it, that's why here new sum function is undefined, and we are trying to call a, we are trying to invoke a function on undefined. So yeah, definitely it will give me error. It is similar to doing something like undefined and I'm calling it as a function, or maybe like 5 and I'm calling it as a function, right? So it will definitely throw some error. So this is like one difference between function statements and expressions, right? So is it clear? Any doubt in this? So it is just a similar concept. All we need to know, all we need to learn is like what is hoisting and how hoisting works. Then you can easily figure it out like why we are getting this error. It is saying like if we read the error, it is saying now new sum function is not a function. Why are you calling it like a function with the parentheses? So I tried to search like why it is so. I see like, okay, it is a variable, and we are using it before declaring or initializing it. So definitely its value at this point of time will not be a function. It will be a undefined value this time. But when we run the line number 13, like step by step, it will change the value of undefined to a complete function. That's why if I'm calling after that, it will not show any error. So I'm removing it from here. My mistake. So I'm removing it from here. I'm trying to run this program, and I'm not passing anything. That's why I'm getting not a number. So if I pass like 3 comma 4, it will give me the 7. Let's check 9 or 7. So you need to keep in your mind, like if you are declaring a function like this, you can only use this function after declaring and initializing it. Basically after this, you cannot use it before. But in this normal scenario, you can do it
It is just because of hoisting, like how JS works. Okay, so let's delete this and we'll keep normal sum function. Okay, no error. I'm getting 9. Okay, so there is one like in ES6 that in 2019, 2015, ECMA added one more feature, like one more way of writing a function in 2015 version, which is known as ES6, is arrow function. Arrow functions are easy to write. So basically, we can say they are sugar parted way of writing functions. So it's like instead of writing function, keyword, then sum, then parentheses, then curly braces, you can reduce the syntax and write it in a latest fashion. For example, like I have like, let's say, let our new sum function, right, is equal to, in function expression we were doing something like this, right? Correct. And we were accepting two values, a comma b, and we are calling it like a new sum function. Keep it away for a minute. And if I'm doing 4 comma 5, and here new keyword, new variable, let simple, right? But in case of arrow function, you can even remove this function keyword. That's the one change. And secondly, you need to put equal to and then uh, angular bracket in this fashion. It will be like something like arrow. So let's go back. So what I did to change a function expression to arrow function, I did two things. I just removed the function keyword, and between these parentheses and curly braces, I added this syntax like caution mark and then angular bracket, so that it will be like something like arrow. And see, we are not getting any error. And if I try to run, let's add some string also. Uh, sir is this, right? And when I try to run this, we are not getting any error. So definitely it's a valid syntax. Otherwise, we would get some error here in the console. So like this is the arrow function. We are using arrow instead of the function name. There are some differences between this and a normal function. I'll tell you definitely. But in general terms, in this scenario, for this example, or in normal usage, it will be more or less same. It's just a new and a sugar-coated way of writing a function. It's small, and some people thinks and feels like it's easy to understand. It's like depend upon person to person. But for now, is it clear like the arrow syntax function, basically the arrow function syntax? Just ping yes or no in chat box so that we can proceed. Just a minute. Okay, cool. So the difference between the normal writing a function and this arrow function is difference in value of this keyword. So we haven't studied about the this keyword. So for now, I am leaving it.
And when we pick the topic, 4 and 5 must be added. Okay, okay, my bad. I wanted to write string here, but that's a typo error. I wasn't doing addition on string and number. So this should be the question. My bad. So so basically I just want to print answer 9. That is the addition of these two. Anyway, we are not focusing on the addition like the operators. We are focusing on the syntax. So syntax is clear. Like what I did, initially it was like function keyword, and that's it. And then parenthesis where you will accept the parameters and the curly brackets to make a block of code. But what I did, I removed the function keyword, and between this parenthesis and the curly brackets, I added arrow, right? One more thing, like in function, we can return something. We can return a value, right? So let's return a value here. Instead of consoling it, what I'm doing, so I'm just return result. And now when we call this function, this particular piece of code will get run. And here we'll get result a plus 5, a plus b will be 4 plus 5. And here in result, we'll get 9 as a value. And we are returning that value. But we are not storing it anywhere. So let's store it. Let our final result is equal to new. So here when I try to console, our final result will get the same value. I I'll get a 9. It is like initially I was consoling inside the function, but now I'm just returning the result and storing it in final result variable and simply consoling it at line number 16, right? So in so like to make it short, like to make it even short, what I can do, like inside the function, what I'm doing, I am storing the addition of these two inside result, and then I am returning the result variable, right? So instead of that, I can remove this line, and in case of return, I can do simply a plus b. So simple enough, like I'm getting a and b, and I'm adding them, and in the same line, I'm returning the value, right? Let's try to run this. Okay, we got it now, right? So in case of I'm removing this command. So this is our function. So we reduced our sum function like in just 3 lines of code. We are not using any result variable and storing the value in that and then return that value. Instead of this, I'm just doing both the things in one line. I have returned keyword. I have done a plus b. So first of all, a plus will get evaluated and it will become 9 here and it will return the value 9, right? So in case of arrow function, you you can do it in even in the less number of lines also. Like for example, you it is not compulsory in the arrow function to use this curly brackets. So if you not use any curly brackets, let's say I'm doing backspace. If you are doing just a comma b, accepting the parenthesis, then the arrow function. And if you don't have any curly brackets, it means you are returning something. It is understood by the JS that you will return something. So in that particular case, you no need to use the return keyword. It's like it will get auto added. So it will be just like this. And it will work perfectly fine. So here we have new sum function. In arrow function, we are accepting two parameters. We have this arrow, and after that I'm not using curly brackets. It means that automatically behind the scene this return keyword will get added. So you no need to write anything. You will just write your
final value. Like you want to return a plus b, then it will a plus b will get returned. Let's try to run this. Okay, we are getting 9. So see, like in one line, you are creating a function, you are adding two values, and you're returning them. All three things are happening in one line. So and it's easy to understand also. Like once you get familiar with the arrow functions, you will be like, okay, you see arrow, okay, this is a function, and you're returning this. That's it. You got it. Like okay, we have one new sum function which will return the addition of these two parameters. So any doubt? Like should I repeat like how what else I have changed to come to this single line step by step, or is it clear? Like just ping in the chat box. Okay, Shashank, no doubt. And what about others? Okay. Okay, Akshay. Okay, Baha. Okay, cool. So like this is our arrow function. It got added in ES6. So the difference is one is in the writing style, or you can say the syntax is slightly different because in arrow function you don't need to use the function keyword. And the other difference is the value of this keyword will be different. So whenever you create a function, you get some this reserved keyword, and this has some value, and it gets changed like how you are calling a function. So I'm not explaining in the depth because this is our next topic of next class. But just give you the idea, I'll show you like function ABC. Here inside this, I'm just doing console.log this, and rest of them I'm simply commenting. So this is our first example. I'm commenting it. Mhm. So for now, what I'm doing, I created one ABC function and I'm consoling this keyword. So we get a lot of stuff, right? See, a lot of data. We'll study about this. So this, the value of this keyword gets changed in case of arrow function. That's the second difference, and we'll pick it up in later classes, right? Okay, so I'm commenting this and moving on. So let's study about objects. Okay, so what are objects or why we use objects? So basically, if you want to store some structured data and you want to club in easy terms, like you have, suppose you have a lot of variables and all the variables are belong to one particular thing. For example, I want to, let's say, pick any object in the real life, let's say car or student. So let's say we have students, and so what are the properties, or what could be the properties and the values that you need to store if you are talking about a student in real life or even in the programming? Definitely you will say, okay, what's his name? So I can say like I created a variable. You can create it using where or let. Here it doesn't matter. Let's say let. I said student name, and its name is like let's say Ram. And then you think, okay, what else get associated with student? You say, okay, I need to store his roll number. It could be a string, it could be a number. So let's say in UID it's a mixture of character and number. So I say UE and some random number. After that, maybe his number, or let's say it's CGPA. So it would be a number. So I'll say like okay 7.5, right?
So yeah, that's fine. You can store these properties by creating variables again and again. But what if I tell you like you have yeah, name, age, DB, roll number, definitely like let's add the age also. Age is like let's say 20. So there can be a lot of properties, which is all these properties you can think like it's of a student properties. Like student is a in programming terms, everything is object like car, student, anything you can create, it will be object. So these are the properties of the object, but you are creating it with lot of variables. So what if I ask you to, we have three students, you will be like, okay, I need to create a student to name, and it will get like cumbersome and code भी काफी messy हो जाएगा. So if I need to store these kind of data in a structured way, I can use objects. So let's see how we can create an object. To create an object, there are multiple ways. A very basic one is like first you will use let or where or const, like and the end it will get stored in some variable or some constant name. So let's say I am storing a value of a student. After that is equal to, you need to use the curly brackets. I told you na in yesterday's class the curly brackets are also used for creating an object. So that's it. You have created one student object. Though this is an empty one, you have don't have any parameters, any values, but this is a object. Let's comment this for now and try to console this. And if I try to run this code, okay, yep. Let's clear this and try to run this again. Okay, we got it like the similar curly braces. So this is the empty object. And if you want to add some properties, what you can do, like you created the student name. So here also you need to have you have to write a name of your property. Then instead of question mark, it will instead of equal to, it will be colon, and then the value. The value is Ram, right? Then comma, it will be all the properties will be comma separated, and it will be like in the left hand side you will write the property name and then colon, then the value. Value can be anything. It could be string, number, boolean, function, and it could be another object. It can be anything, right? So here for example like roll number, and I'm writing string UE and some random number, then comma. After that, I have one more property, CGPA. It will be a number, 7.5. I'm adding age. It will be a number, 20. So see, so we have created one object, which is a student object, and we have like 1, 2, 3, 4 properties. Now try to console.log student and let's see what we are getting. So see, we got like in curly brackets, we got all the pairs of our parameters and value, and we can expand this. Now these all four properties, GPA, age, roll number, students, is associated with a student. You created one variable and you added like number of properties, name, age, roll number, date of birth, everything in an object. So this is more structured and easy to use in the programming, right? So the next question arises like, okay, we have created one object, how to use this, how to access the value. Like for example, if I created a simple variable student name, I can console.log student name and I can use that value anywhere. Like we were using it in previous classes where is equal to 10, and I can simply console.log 10 or use this value anywhere. So if you want to use, like there are two ways of reading a value from object. Let's see how we can do this. Here though you are printing the whole object. But what if I tell you like all I wanted is student name. So how you can extract this value RAM or this roll number from an object? That I'm telling you. There are two ways. One is known as dot notation, and second is using square brackets.
right? So let's see. Okay, so I want just the student name from the student. So in dot notation, what you will do, let's store this in, I'm creating a new variable, let's say name is equal to, and here I want a value Ram from this object, right? So for this, what I'll do, I'll write the object name student, then dot. After that, I need to write the our property name, right? So you will get the suggestions also. And I clicked on this, or you can write student name, enter. So what it will do, it will go into the student object and search for the student name property, and whatever the value is that, it will extract that and read that for you. After that, this will become Ram, and you can use it like for in console or storing in some other variables, and you can use it anywhere, right? So here name will become Ram. Basically, it should become, we'll see, and we are consoling it name comma, and then I'm printing name. Let's try to run this. See, we got name Ram, right? And similarly, like if you want age, simply in the dot notation you will say age, and here you will print age, you will get the age. Name 20, okay, and we can change this also, like to make it more clear. So cool, we got it 20, right? And yeah, one more thing, like here, what if you want like two words, you want to write like your property name, you want to write like roll number, but separated by a white space. To do that, you need to wrap it up in single quotes. Then you can write new roll number, anything. Otherwise, there is no need to put this quotes. If you want, you can, but it will not make any difference. Without this is more clear, like it's more standard, right? Okay, so if I need, and what is the dot notation? We got it, like all we need to do is just basically object name, and then you need to dot, and then property name. In this fashion, you can get the value. For example, student dot name, student dot, let's say age, right? And console, and we got it 20, right? And using square brackets, it's similar, like in this you can do it like console dot log, and if you want to retrieve the same value like age, you'll use the square brackets, then you'll use the single quotes, and here you will write the property name, object name, square brackets, and then your property name in like in a string form. See, you get 220s, right? Okay, so sometimes this square notation is very important. For example, you want to retrieve this roll number which is separated by white space. You cannot do this with dot notation. For example, you will like roll number, and then it will automatically see. I was trying to doing not dot notation, for example, like age, but this ID suggested me like you cannot do this because there is a white space. So you have to use your square bracket notation. So sometimes it's very important like square notation. So any doubts so far, guys? Like just ping.
Okay, so there is one more benefit of using square notation is like instead of writing the direct value, you can use the variable names. Sometimes you don't know like front which value you want to retrieve. It can be like from the input from the user. Like maybe suppose you have website and there are a lot of students data and your teacher or someone is trying to fetch the name, so it will type like okay, I want this student data and I want just age. It will fill it out in the website, and you have to from JS you have to retrieve the data from the object. So at that time you don't know like what else the teacher or anyone will be searching for. So in that case, let we can use the like square notation. For example, we have like our input is let's say age. Here I'm doing the hard coded value, like I'm storing age in the input, but it can be dynamic using your website, and you need to retrieve this data from your object. So you will say like console.log data is equal to question mark. Then you need to retrieve the data. So student, that is your object name, square brackets. Then initially what we were doing, we were manually typing like string as a property name in the string fashion. So instead of that, you can do directly input. So the value of input is this age, and you can use this variable name inside the square brackets, and you will get the value of age, because at the end value of input is a string, which is a age, right? So when I try to do, so data is equal to 20. So now if you change the input, let's say I'm changing it with CGPA and try to run this, it will give me data as 7.5. I didn't change anything here. So I'm like accepting a variable, and then I'm retrieving the value. So it is only possible with the square notation. You cannot do it with the dot notation. Okay, moving on. And I told you like this student is an object. Let's confirm this also. So there is inbuilt function type of, so that you can write in front of any variable and you will get to know like what is the data type. For example, let's comment this for now. I'm commenting all the code and I'm just keeping student only, right? So here I created new, let's say a new number, and it is equal to 5, and I just want to know like what is the data type of this new number variable. It's a variable and I want to know like what is the data type. So I can do like type of, and I'll write the variable name, and it will give me the output like what is it is a number. Yeah, it was 5 and a number. Let's change it for ABC for now and just try to change the values. Now I'm writing a string, right? So let's say hey, if I try to run this, I'll get string. And now let's check for student. We have a student object, and we will get object. So it is a like data type of JavaScript. It's not a primitive data type, but it's a data type object, and it's very important. And okay, in later on, like suppose I'm just telling you the simple things in the object, and I'll tell you the what is the exact use of object. And JS is built on object-oriented programming language. I'm adding one more line. Initially, I told you like JS is a programming language in first class. Then couple of class backs, I told you like JS is interpreter language and scripting language. Then I'm telling you like it's a object-oriented based programming language. So see the word object-oriented. So to whole JS is has become like it's made up of objects. Everywhere you will see objects, even in the
I'll tell you later. Like even your type of string, if you are talking about a data type string, and then it's also an object. Function is also gets converted into object behind the scene, but we'll not go there. So object is very important topic. And what if like you created this object in this fashion and you forget to add some properties, or maybe in later stages you want to add some properties in this student object. How can you do that? It's super simple. All you need to write is student, and then you will write a new property name. Let's say date of birth equal to, I want it to be a string. Let's say what's the date today? It's 24th November, right? Let's say 2000, right? So here, see, like initially we were consoling it, or we were reading the value from this. But what I'm doing here, I am doing student.dob. It is the left side of equal to. So in the right hand side, we have the value, and it will get assigned to this. So what JS will do, JS will say, okay, we have a student object, then dot, it will try to search the DOB property. If it's there, it will update the value. If it's not there, it will add another property for you, and attach the that property to this value. So this is very simple. Like you use student.dob, and if I try to console our object, that is student object here, let's console it before also. It's before, and here we are consoling it after adding new property, right? Let's try to run this. So we'll get two, like before this is a keyword, is a string, and after that it's printing the whole object. And here you can see like we have dob value, and then you can read like simply that dob or something. And if you want to update any property, it's simple. Here like student dot age, you will put the new age, let's say 22, 23. That's it. So what it will do, since it is in the left hand side of equal to, it will search in the student, it will search for age, this you are talking about this, and here we are updating the value with 23. So 20 will become 23, as simple as that. Here age was 20, but here age was 23, right? Okay, so what if you want to, and if you want to delete any property, we have like a reserved keyword, delete. So it will ask you like what you want to delete. We want to delete student, and inside that student, I want to delete age property, right? Simply, you need to write delete keyword, and after that, then the property name with either with a dot notation or with a square notation. So wherever I'm using the dot notation, you can use the square notation. It's same. It just like in the square notation you get some extra couple of features, but whatever the dot notation can do, you can also do this with the square notation, right? So if I try to run this, so here like before we have the age property, but after that age property is not there, right? So we deleted the this age property in from this object. Okay, so I told you like in object, in this property like a CGPA, you can have string, you can have boolean, you can have number, and even you can have like function. So you can store any value here. So let's try to store one function also. Let's take some other example. So I'm creating a new, let's say new object with the name user, and here I'm having just name, let's say same name Ram, and here I have a score. Let's say like we are just trying to create some mini game, and we need to store the data of all the users, their names, their score, and their level, like game is level below. The score, let's say like initial score is zero, and its game level is like maybe one.
simple. Let's say everything is fine. I'm running this. So we created one object which is name, score, and level, which has three properties. After that, I can have one more property, like let's say, for example, I'm just using ABC. Give you an example. We can store the function also. Here in this function, I'm just doing console.log hello, right? So let's try to run this and see. So we got four properties: name, score, level, and ABC. And here ABC you can see like it's a function, right? Now we know that like whenever we create a function, the code doesn't get executed as soon as we call until unless we call this function. So in case of object, how can we call this function? So it's very simple. User, then you want to read this property. So you have to like either dot notation or square notation. So let's go with dot. What do you want to read? I want to read ABC property. And now I know that user.abc will be a function, and to call a function or to invoke a function I need to use parentheses, right? So user.abc, then bracket. If I try to run this particular code should run and we should get like hello in the console. See? Yeah. Now what is the use of like storing functions in object? In any like coding terms or in any programming terms, in day-to-day life you will deal with two things. This is very generic. It's not like JS or something. It's just like for the coding perspective. In day-to-day life, when you try to code, you will deal with two things. One is like your data. For example, here in this particular case, we need to store user name, score, level, and maybe there are multiple users. So I'll create multiple objects like user one. Here I think can be user two, and we can change the name and everything, right? So one data, and second is like functionality. So functionality could be like, okay, you are playing some KBC game and you have given the correct answer, so your score should increase, your level should increase, or something you need to update a data. So this is the functionality part. Like for user one, you want to increase the score by one, and maybe for user 2 you want to decrease or increase the score of user 2. So these are the functionality. You can see this in any case, like in any small example, in any big code. And we were just storing the data, and we are performing some functions. So for storing data, we have like variables, we have objects. Later on, we'll study about arrays also. So these all are the data, like data structures, or your way of storing the data or structuring the data. Functionality part is like functions, like which we studied yesterday. We wrote a function for multiply, and at the end, the fight is like we need to create a link between data and functions. For example, let's remove this for now. I have two users, user 1 and user 2. Now, this is a very basic example, but you can relate like why I'm telling you like there's a small fight or there's a complexity in linking the data and the functions when you are talking about a lot of data and a lot of functions. Here we have just two users, user 1 and user 2, and I have one function which is like increase the score, right? So I want to write a function so that through this function I can increase the score. Now first problem is like okay, I'll accept one parameter. So let's say I'll say give me the object name of the user object name. Basically this user one or user two कि किस 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 user का आपने, this is the object name ना, like we created one object
इसका नेम है user2, उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी है नेम स्कोर एंड लेवल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. So user object name दे दो, then what it will do, it will, it's a very basic example, so it will do, okay, I have user object name, so after that I need to access one of the property because this is the object, right? So let's remove name. So I'm passing one object here जिसका भी मैंने स्कोर इंक्रीज करना है. on on the top of that, like on this object I am reading the score property and I'm increasing this. Simple. So in later terms, suppose I want to increase the user one. Let's print first before and after scenario also. So this is before, and I'm printing both the objects user one and user two. After that, I have one function. Let's call this function, otherwise this code will not get run. Here I'm to call a function, I need to write the function name, then parentheses. I need to pass one argument also. It will be like user1 or user2. Let's say I'm passing user1. So here I'm just writing user1 and user1 is the object. So I'm passing object inside this function. So this user object will become user1, and then I'm reading the property score and increasing the score, right? Let's print after this also. Let's see what will happen. Okay, so this is before. We have two objects, see, like bracket starts, bracket end, and inside that I have Ram, score 0, level 1. And the second object, John, then score 0, level 1. After that, what I did, I increased the score of user 1. So, see, in user 1, name is Ram, score become 1. Initially it was 0. In case of John, we haven't changed anything, so that's fine. So here, like we are storing the data in objects and performing the functions. Now suppose like there are 100 users, right? And there are 50 functions. So every time you need to write line 85 and you need to remember, okay, I'm passing user 1. Then maybe in some users you don't have score properties, it's for another game, and for that you cannot pass in increase the score, increase the store function. So you know, you always you need to remember, like you have the list of objects in the right hand side, in the left hand side, let's say, and the list of function in the left hand side, and you need to do the mapping. Okay, for this particular user I want to use this function, and then in later on I for user 99 I want to use let's say some xyz function. So it becomes very difficult to do the mapping or to remember everything. You need to scroll up again and again to see how many functions are there, how many objects are there. So in this object it's very simple, it's very easy. You can create one increment function here. I'm creating one property increment. This is a function, and what this function is doing, you want, the purpose of this function is just to increase the score. So here I can write this dot score. Here just remember this, like this will be user one object only. We'll discuss the concept of this later, but here we have like this keyword, the value of this keyword here will be equal to the object in which you are writing this. Remember this only, right? Okay? And here also I have increment function, let's say function, and this dot score. So here the value of this will be this whole object, but inside this the value of this will be this object because I'm inside of user 2 right now. And let's delete this everything, and let's talk about user 1 only for now. I'm printing just to see what's coming. Okay, we got same thing.
Like we got name, score, level, and some function. After that, the value is same because we are not doing anything. So to call this function, we can do like user2 dot increment. That's it. On user2, you are calling one function. So it will automatically detect like, okay, we need to increase the score of this. So you now need to write separate functions and separate objects and then decide, okay, on which object you are performing the action. Is simply you need to write the object name, then function increment. This dot score will increase the score of this. Let's see. Okay, we are printing user one. Oh, I increased the user two. For I need to increase the score for user one. Now we can see the changes. And here, like in increment, first of all, let's try to see like what the value we are getting here for this, just to give you one idea, right? Let's call just increment function, nothing else. Here also, let's write console.log this. So we have just simple 5-6 lines of code. I created one user, one object. I have number of properties. I have one function, and I'm trying to call that function using dot notation, right? See, I did user one dot increment, and inside that I'm just trying to console the value of this, which is itself a object. So that's why I can use this keyword to refer myself. Like I can score, I can change the score, let's say 10. And if I console our object after the incrementation, I should see score now will become 10. If I try to console it before that, it will be 0. See, initially the score was 0, now it will become 10. So let's see like what we have done here. I created one object user1, using the simple curly brackets. I have given some properties like name, score, level, and then increment, which is a function. Inside that function, what I'm doing this dot score is equal to 10. So first of all, we should know like what is the value of this. We see like by consoling, this is nothing but this object only. So this is a use case of this keyword, like it uses to refer itself, like in objects. If you're writing a function and you want to use this keyword, so it will always refer to that object only. Like I'm inside the user one, so the value of this will be user one only. And what I'm doing, then I'm trying to access the dot score property, which is this only, and I'm changing the value from 0 to 10. So that's why when I try to run this, I'm getting like initially I'm getting score 0, but after calling this function, I'm getting the value as score as 10, right? So okay, so just 1 or 2 minutes break. Just go through this. Like, is it clear? Like from today we have learned about objects, dot notation, delete. We'll do some practice also, but for now, just try to focus on this code snippet and let me know like if you are facing some issues or not. Don't worry about this. Consider it as like object name only, user one only. So basically the value of this is, I write it down. Value of this keyword is user one object only in this particular scenario. Yeah. So just try to understand this code snippet, and if you have any issue, just drop a message. We'll resolve that.
And for that, let's take 2 minutes break, right? Sure, Aman. Just give me 1 minute, then we'll repeat it again, right? Okay, so Aman, is this the that function part, that increment part, or the object concept also, or it's just that how we are using the function? Just let me know like which part you want me to repeat, the whole thing, or just that how we are using the increment function here. Okay, so basically what we did here, like let's move this. So first of all, we studied like how we created the object, right? Object is a structured way of storing the data. So to create object, we need to use variable let or var anything. After that, we will use like this curly bracket. So I'll create one new object here. Let's do one here also like see. So the first exercise like you need to build the JavaScript objects. So here to build the object, you need to use like curly brackets and then you can give the property names and values separated by column. So let's see the task. It is saying make an object that represents a dog called my dog, which contain these properties. So let's do this. So they are using like const. We can use let, where, anything. It depends like the situation. So we created one my dog variable. Then we are having like these curly brackets. After that, if we need to add some properties, all we need to do is like we write name, then colon, and the value. So we can write anything. Let's say we can put any string like dog name. Let's say Snoopy. Then comma. Then the second property name. Legs. It could be like how many legs are there or whatever it is. Then tails and friends. These are the properties. Like through this we can create one object. Contain the properties name a string. Then tails. This is the property name, and we can put any value, string, number, boolean, anything. Let's say random. Let's say, and then friends. It could be like string or any value. Let's say hey. Friends is an array. So we haven't studied the array. So just ignore this part. I'll let you know later. But array looks like something this. So here what we did, like we have my dog, then we have curly brackets, and we have different properties of a object, and these are the values. So it is as simple as that. Like now we have created one object, right? In our case also, it was simple. Like we created one user one, and we have names, code, level properties, right? And then second is how you can retrieve the value of RAM or value of these properties called level, right? For that we have like dot notation and the square notation. If I need to read the property name from user object, all I do, I write the user one that is object dot, then I can write okay, I want to read the property of name. So it will give me, it will search in this object where is nam, and it will give me the value this. So user one dot name is reading the value of name
from user object. So I should get Ram here. Let's see. Let's comment this photo. Right. So with the help of dot, you can retrieve the name. And if you want to retrieve in other fashion, you can also use the square bracket, and then you need to give the property name, which could be like name, score, level, whatever you have mentioned while creating the object. See, you got Ram. Uh, Fine till now, Aman? And yes, okay, cool. And the second scenario could be like you have created one object and you want to delete some property, like you don't want score in your user object. So to do that, all you need to do is you need to use delete, which is a reserved keyword. Then you need to give the object. Okay, you want to delete something from user one. What you want to delete, you need to use either dot or square notation. For example, dot score. So this score will get deleted from this whole object. Let's see before and after that scenario in this case. What I'm doing, I'm consoling it, reading the whole object, then I'm deleting one property and I'm consoling it again. Initially, we had like name, score, level, and increment. After that, score is getting a score delete हो गया इसमें, right? Fine. After that, the situation could be like you want to add one more property into the object. So you can do it like you will write user object name, then dot, then the name of your new property. Let's say, let's say in date of birth equal to, then you will give the value. Here I'm giving a string. So what's happening here? We are referring to user one object, which is this object. Then I'm referring to DOB property, which is not there. If it is not there, it will get created by the JavaScript. All you need to do is give the value. So the value is this string. So if I try to run this, you'll see initially we had name, score, level, and increment. After that, name, score, level, increment, and DOB got added in that object. So by line number 81, new property got added inside this user one object. Fine. Similarly, if you want to update anything, you'll do like, for example, user one dot score. You want to change the value of this, let's say 100. So here we have one object with these properties. At line number 81, what I'm doing, I'm referring to user one object. Inside that, I'm referring to score. And what I'm doing on that, I'm doing equal to operator. So basically, I'm updating the value of this property. So here, score will get updated. Let's say before and after. So at line number 79, we had like score 0. Then we update the value of score to 100. And then at line number 84, we are getting the new values. This is a whole new object and we are getting score is 100, right? So after that we studied like what if I want to increase this score? Is there any better way? So what I did, so I told you like in case of objects, we have like increment property. The value of increment property could be anything. Here we have like string, here we have number, but I can also write functions. So let's say I have written a function and inside that function I'm simply consoling hello. Now the same scenario, like how can we call this increment function? So this increment is a part of user one object. So first of all we need to write user one, we need to refer that object.
After that, using dot notation, we can read any properties. So which property do you want to read? Increment, but this is a function. To invoke a function, you need to use parentheses, and that's it. And when you try to run this code, you will get hello, right? So this function, like Rudra also told you yesterday, function क्या है? Function is your friend and you can do whatever you want. तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये function ये काम कर रहा है, then जब भी तुम function को call करोगे वो काम आपके लिए कर देगा. तो मेरे को ये function की functionality सिर्फ लॉक करने के लिए नहीं चाहिए थी, मेरे को चाहिए थी कि मैं इसका score increase कर सकूँ, right? So अब ये score किसका part है? User का part है, user वन का. तो सबसे पहले मुझे user वन को रेफर करना है. ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको ये ऑब्जेक्ट के अंदर ही मैं उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा हूँ, तो उसके लिए वहाँ पे एक कीवर्ड होता है दिस, जिसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे. और फॉर नाउ जस्ट थिंक ऑफ दिस इज दिस ऑब्जेक्ट, कंप्लीट ऑब्जेक्ट. तो तुम्हें दिस डॉट अगर मैं स्कोर करूंगा तो दिस है तुम्हारा ये पूरा ऑब्जेक्ट. डॉट स्कोर किया तो मतलब तुम्हें ये वाली प्रॉपर्टी मिल गई. उस प्रॉपर्टी पे क्या करना है तुमको? उसका स्कोर अपडेट करना है, लेट्स से टू 100, राइट? अगर अब तुम यूजर वन डॉट इंक्रीमेंट करोगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा. इस वाले फंक्शन में क्या हो रहा है? हम कर रहे हैं दिस डॉट स्कोर, और दिस की वैल्यू मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये पूरा ऑब्जेक्ट होता है. वो हम पढ़ेंगे कि कब क्या होता है और कैसे हो रहा है ये. फॉर नाउ एज्यूम और बिलीव करो मेरे पे कि दिस का जो वैल्यू है ये पूरा ऑब्जेक्ट है. अगर मैं दिस डॉट स्कोर कर रहा हूँ, इट इज सिमिलर टू डूइंग दिस, लाइक यूजर वन डॉट स्कोर जो मैंने आउटसाइड किया था, राइट? मैं बस यूजर वन को दिस से रेफर कर रहा हूँ. दिस डॉट स्कोर क्या होगा? ये वाली वैल्यू को रेफर करेगा, और उसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी? 100. तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराऊंगा बाद में, तो मुझे अपडेटेड वैल्यूज के साथ ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें हमारा स्कोर 100 हो जाना चाहिए. तो ये वाले हम ये क्वेश्चन किया था हमने, बहुत छोटा था. तो हमने क्या किया, प्रिंट करा के देखते हैं. बिफोर कि अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ तक मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया है और ये फंक्शन बनाया है, इसको कॉल नहीं करी. उसके बाद मैंने यूज़र वन डॉट इंक्रीमेंट से इस फंक्शन को कॉल किया, और ये फंक्शन क्या कर रहा था? स्कोर को इंक्रीज कर रहा था. तो हम देखते हैं कि हुआ या नहीं हुआ. कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं आफ्टर प्रिंट कराऊं, इफ आई ट्राई टू रन दिस, आई एम गेटिंग लाइक टू ऑब्जेक्ट्स, वन बिकॉज ऑफ लाइन नंबर 77 एंड वन बिकॉज ऑफ 81. जब मैंने पहले प्रिंट कराया सेम यूज़र वन को, मेरे पास था स्कोर 0. आफ्टर में हमारा हो गया स्कोर 100. सो अमन, इज इट क्लियर, लाइक अपार्ट फ्रॉम कि दिस की वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के इक्वल कैसे हुई, इस लाइन को छोड़ के? कोई डाउट इसमें? कूल. ओके. Okay, so just let me check the syllabus, like what's the next topic. Just one more thing, like it just like a naming convention. Functionality wise, nothing gonna change. It's just the naming convention. जब तुम ये ऑब्जेक्ट है यूजर वन, राइट? यूजर वन के आगे, यूजर वन के अंदर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक फंक्शन रखते हो, और तुम अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो, तो उसको मेथड कहते हैं इंस्टेड ऑफ फंक्शन. दैट्स इट. दिस इज द नेमिंग कन्वेंशन. लाइक मे बी अगर तुम ऑनलाइन वगैरह स्टडी करोगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि ओके, ऑब्जेक्ट यूजर वन इज द ऑब्जेक्ट विच हैज़ वन मेथड विच इज इंक्रीमेंट. इसका मतलब है कि यूजर वन एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इंक्रीमेंट करके एक फंक्शन है. तो दिस इज जस्ट अ नेमिंग कन्वेंशन, ताकि लोगों को पता चल जाए ओके हम ऑब्जेक्ट के अंदर वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस केस में इसको मेथड्स कहते हैं, राइट? ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, अब हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग और यूजफुल है. अदरवाइज या जस्ट लाइक इन जावा लैंग या इन जावा लैंग्वेज में या जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में बेसिकली नेमिंग कन्वेंशन है, लाइक. सो हम पढ़ रहे हैं कॉल बाय वैल्यू वर्सेस कॉल बाय रेफरेंस.
अभी के लिए इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। तो दिस इज अ लाइक जनरल टॉपिक, इस ऑब्जेक्ट्स का पार्ट नहीं है, इट्स लाइक जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा बहुत एक कॉन्सेप्ट है या फिर एक चीज़ है जो पता होनी चाहिए सबको। कॉल बाय वैल्यू वर्सेस कॉल बाय रेफरेंस। तो मैं एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अ वेरिएबल वेयर a is equal to 10 and I created where b is equal to a, right? After that what I did, I changed the value of b. Since b is a variable, I can update that value to, let's say, 100. Okay, so what will be the output of these two consoles, 91 and 92? This is just like 4 or 5 lines of code and very straightforward. Just quickly write it down, like what will be the value of a and b, 10 and 100. Yeah, good. Okay, so we have a is equal to 10. Then हमने b को एक एक पर रख दिया तो b भी 10 हो गया, लेकिन 89 में हमने b को अपडेट कर दिया 100 से, तो that's why we are getting 10 और 100, right? Fine. सो अभी के लिए इसको साइड रखो और एक और एग्जांपल पिक करते हैं हम। हमने किया वेयर यूज़र वन, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर सिर्फ एज प्रॉपर्टी है विच इज़ 10, एज इज़ लाइक लेट्स से 18, राइट। एक और हमने ऑब्जेक्ट बनाया यूज़र टू, उसको हमने रख दिया यूज़र वन के इक्वल, एंड हमने यूज़र टू भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एज प्रॉपर्टी होगी, डॉट एज किया, उसको मैंने कर दिया 22, राइट। और उसके बाद मैंने क्या किया, सिमिलरली जैसे मैं यहाँ पे दो कंसोल कर रहा था, यहाँ पे भी दो कंसोल मैंने करे। एज एज ऑफ यूजर, एयर यूजर वन, एयर यूजर टू। अब यूजर वन की एज कैसे रिट्रीव करते हैं, हमने पढ़ा था यूजर वन ऑब्जेक्ट का नेम, देन उसकी प्रॉपर्टी डॉट एज, राइट, विद डॉट नोटेशन, एयर यूजर टू डॉट एज, राइट। सो यहाँ पे सिमिलर एग्जांपल है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए था तुम्हें दिख जाए। हमने यहाँ पे ए और बी बनाया, बी को एक कर रखा, अपडेट किया, कंसोल कराया, हमने यहाँ पे किया कि ऑब्जेक्ट के साथ। तो नाउ अब मुझे बताओ कि इसमें क्या आउटपुट आएगी नीचे वाले कोड में, इस वाले कोड में क्या आउटपुट आएगी, एजेस क्या प्रिंट होगी यूजर वन एंड यूजर टू की। 18 एंड 22, ओके, एंड बाकी शशांक के अलावा किसी को आंसर देना है तो ओके, अमन, या 18 एंड 22, लाइक यही एक्सपेक्टेड था हमारा। लेकिन अगर मैं रन करूँ, एक बार ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, सिर्फ नीचे वाले फोकस कर रहे हैं। यूज़र वन था, यूज़र टू इज इक्वल टू यूज़र वन, यूज़र टू डॉट एज 22, और हमने एज एज को प्रिंट कराया। तो हमारा एक्सपेक्टेशन थी कि 18 एंड 22 आना चाहिए, बट व्हाट, हमें क्या मिला, 22 एंड 22। इसके अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा 18 एंड 22 आना चाहिए था, बट वी गॉट 22 एंड 22। हम यही पढ़ रहे हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, जो हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। अब ध्यान से सुनना कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि तुम्हें इन फ्यूचर में गलती ना हो। कभी तुम फ्यूचर में ऐसे तुम कॉपी बनाओ, यूज़र टू को करो, तुम यूज़र टू को अपडेट अपडेट करोगे, यूज़र वन भी अपडेट हो रहा है, सी एज ऑफ यूज़र वन भी 22 आ गई, एज ऑफ यूज़र टू भी 22 आ गई। तो हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ये, इसको कमेंट करते हैं। इस केस में हमने क्या किया, ए की वैल्यू क्या है, एक नंबर है, राइट। हम चेक भी कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ए। हमने जब टाइप ऑफ ए किया तो हमें मिल गया नंबर। सिमिलरली बी भी, हमारा एक क्या है, नंबर है। तो
तो क्या होता है जब भी हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं हमारे, मैं लिख भी देता हूँ, जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं फॉर एग्जांपल हमारे नंबर, बूलियन, और हमारे हो गए लाइक स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड, राइट। ये नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड जो हमारे होते हैं ये प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं। अगर तुम b इज इक्वल टू ए, अगर तुम इन सब में से नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग और नल और अनडिफाइंड वाले डाटा टाइप को कॉपी कर रहे हो, b इज इक्वल टू ए का मतलब यही है ना कि कॉपी कर दो a की वैल्यू b में, राइट। अगर तुम कॉपी ट्राई कर रहे हो लाइक इन केस ऑफ दीज डाटा टाइप्स नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड, तो तुम्हें कॉपी देता है एग्जैक्टली लाइक कॉपी। अगर तुमने b इज इक्वल टू ए किया तो b की एक सेपरेट वैल्यू होगी 10, राइट। बट ये हो गए हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप। लेकिन ऑब्जेक्ट्स थोड़ा डिफरेंटली वर्क करते हैं, ऑब्जेक्ट्स और इवन एरेज ऑल्सो। सो ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज कैसे वर्क करते हैं, अभी इसको वाले को कमेंट करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल था, ये तो मैं एक्सपेक्टेड था कि 18 एंड 22 आना चाहिए, सॉरी 10 और 100 आना चाहिए, ए और बी की वैल्यू आ गई। क्योंकि हमने क्या किया, बी इज इक्वल टू ए किया, और हमारा ए क्या था, नंबर था। नंबर क्या हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप है, तो जब भी हम उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो उसकी एग्जैक्ट कॉपी मिल जाएगी हमें, बी की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। और ए और बी सेपरेट एंटिटी है, अगर तुम ए को चेंज कर रहे हो तो बी चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। पर ऑब्जेक्ट्स इन एरेज में क्या होता है, इसको अभी कमेंट कर देते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं। तो इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज में क्या होता है, जब तुमने ये वेर यूजर वन इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो एक समझो मेमोरी में एक हमारा ऑब्जेक्ट बन गया यूजर वन नेम का, एक ऑब्जेक्ट बन गया ये, दिस इन मेमोरी में एक कहीं पे एक मेमोरी ब्लॉक में तुम्हारा स्टोर हो गया ऑब्जेक्ट, और उसका तुम्हें रेफरेंस मिल गया यूजर वन में। जब भी तुम यूजर वन को कॉल करोगे वो सर्च करेगा, ओके हमें कौन सा डाटा देना है, वो मेमोरी में जाएगा और वो वाला तुम्हें ऑब्जेक्ट लेके दे देगा। तो इस केस में जब तुम यूजर टू इज इक्वल टू यूजर वन करते हो ना, अब ये जावास्क्रिप्ट जैसे वर्क करती है उसी का, मतलब इसमें कोई अलग से लॉजिक नहीं है। मेमोरी को बचाने के लिए या ऑप्टिमाइज करने के लिए ये इनबिल्ट है जावास्क्रिप्ट में कि ताकि तुम्हारी मेमोरी बच जाए, क्योंकि प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होते हैं, बहुत कम मेमोरी लेते हैं। तुमने ए में तुम नंबर स्टोर कर लोगे, कितना ही नंबर स्टोर कर लोगे। तो जब हमने कहा बी इज इक्वल टू ए कर दो, तो इट्स लाइक ठीक है एक और नंबर बना दो सेम 10 का, और बी को भी 10 दे दो, ए को भी 10 दे दो, और दोनों को अलग अलग 10 नंबर मिल गया एक। अब एक को हमने तुमने चेंज किया तो बी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट्स और एरेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेटा होता है। तो जेएस क्या करती है, एक सिंगल एंटिटी बनाती है मेमोरी में, और उसका एड्रेस दे देती है यूज़र वन को। तो मैं जब भी यूज़र वन को ट्राई करूँगा रीड करने का, तो मुझे मेरा एड्रेस है कि जहाँ पे मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर है, और मैं वहाँ से रीड कर लूँगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, 102 लाइन में क्या आया, उसने कहा कि एक और यूज़र टू है, उसको यूज़र वन वाला ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एरे और ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, वो नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता, मेमोरी बचाने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। जो उस ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस था ना, वो यूज़र टू को दे देगा कि ठीक है तू भी एड्रेस ले ले। अब दोनों यूज़र वन और यूज़र टू एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं मेमोरी में, बिहाइंड द सीन उसकी कॉपी नहीं बन रही। जब तुमने यूज़र टू इज इक्वल टू यूज़र वन किया तो एक नया ऑब्जेक्ट ही नहीं बना, लेकिन दोनों यूज़र वन और यूज़र टू एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे। तो इसलिए जब मैंने यूज़र टू डॉट एज किया तो एंड दी एंड तो वो एक ही ऑब्जेक्ट था, इसलिए यूजर वन और यूजर टू कुछ नहीं है, वो रेफरेंस स्टोर करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस, कि वो वैल्यू को होल्ड नहीं करते। अगर जब भी तुम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो या एरे बना रहे हो तो उसका एक रेफरेंस स्टोर होता है। अब यहाँ पे जब मैंने वेर यूजर वन किया तो एक ऑब्जेक्ट बन गया बैकएंड में, और उसका मुझे रेफरेंस मिल गया। लेकिन कॉल बाय वैल्यू क्या होती है, जब भी प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है वो कॉल बाय वैल्यू से चलता है, उसको एग्जैक्ट वैल्यू ही मिलती है। अगर तुमने ए इज इक्वल टू 10 किया तो 10 वो लेके साइड में हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ए किया, बी को भी 10 की कॉपी भी दे देगा, रेफरेंस से नहीं चलेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट्स और एरेस के केस में क्या होता है, वो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करेगा। अब यूजर टू भी इसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर कर रहा है, अगर तुमने यूजर टू का कुछ चेंज किया तो यूजर वन का भी चेंज हो जाएगा। तो ये होता है कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू।
कॉल बाय वैल्यू प्रिमिटिव डाटा टाइप पे चलती है, दैट इज नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड पे कुछ होता नहीं इतना। तो ये पांचों जो भी प्रिमिटिव डाटा टाइप है उस पर हमेशा कॉल बाय वैल्यू चलता है। तो हमें ये याद रखना है, जब भी हम ए इज इक्वल टू बी करेंगे तो दोनों को सेपरेट सेपरेट कॉपी मिल जाएगी अपनी अपनी। लेकिन इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एरेज इट वर्क्स ऑन कॉल बाय रेफरेंस। अगर यूजर वन इक्वल टू यूजर टू किया तो ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं हुआ, उसका जस्ट रेफरेंस मिल गया। अब दोनों यूजर वन और यूजर टू सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। दिस इज हाउ लाइक जावास्क्रिप्ट वर्क्स टू प्रिवेंट मेमोरी और टू इंक्रीज ऑप्टिमाइजेशन। एंड इसके यूज केसेस भी है, लाइक इट हेल्प्स इन सम सिचुएशन ऑल्सो, बट कई बार कंफ्यूजिंग भी होता है। तो हमें ये याद रखना है, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज we'll get the reference. If I'm doing user 2 is equal to user 1, it means user 1 and user 2 दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको अपडेट नहीं करता एक बारी के लिए फॉर नाउ, लेट्स से मैं कुछ भी नहीं कर रहा, हम सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों एक यूजर वन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, यूजर टू को यूजर वन के एक और रखा है और दोनों को प्रिंट करा दिया मैंने। एज भी छोड़ो, हमने सिंपल प्रिंट करा दिया, कुछ भी अपडेट नहीं किया ऑब्जेक्ट को। तो जब तुम्हें ये दो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं ना, बिहाइंड द सीन ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यूजर वन भी एक सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, यूजर टू भी। जब मैंने वन 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 लाइन में कहा कि मुझे यूजर वन रीड करना है तो उसने कहा ओके यूजर वन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। वो कहेगा ओके ऑब्जेक्ट तो कॉल बाय रेफरेंस होता है, गिव मी द रेफरेंस। बिहाइंड द सीन हो रहा है ये, जब जावास्क्रिप्ट रन करती है। तो एक कोई एड्रेस मिल जाएगा उसको, वहां से वो ऑब्जेक्ट को उठा लिया। यूजर टू के पास भी वो सिर्फ रेफरेंस है, वो एक ही ऑब्जेक्ट को उठा रहा है, कॉमन ऑब्जेक्ट को। जब भी मैंने यूजर वन का जब एज प्रॉपर्टी, अगर मैं कुछ नई प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, हम नई प्रॉपर्टी कैसे ऐड करते हैं, जैसे मैं नेम ऐड कर दिया, ऐसे ही ऐड करते हैं। तो लेट्स से मैंने अपना नेम ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमने ऐड तो किया यूजर वन में, लेकिन वो यूजर वन और यूजर टू दोनों में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, बिकॉज दिस वर्क्स ऑन कॉल बाय रेफरेंस। अगर मैं रन करूंगा तो सी, यूजर वन को मैंने प्रिंट कराया पहले, ये प्रिंट हो गया, करेक्ट है। यूजर वन में मैंने ऐड किया, सी, यूजर वन डॉट नेम, और उसके बाद मैंने यूजर टू को भी प्रिंट कराऊं तो उसमें भी अपडेट हो गया, क्योंकि इस लाइन की वजह से यूजर टू इज इक्वल टू यूजर वन का मतलब दोनों को सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल गया। अब हम पुराने वाले इसमें एग्जांपल में जाते हैं, 18 और 22 वाला। हाँ, ये हमारा एग्जांपल था, और एक ये हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप का एग्जांपल था, राइट। सो अभी इसमें किसी को डाउट है लाइक व्हाई इट्स हैपनिंग इन दो सिनेरियो में कि यहाँ पे हमें सेपरेट वैल्यू क्यों मिली और यहाँ पे कॉमन वैल्यूज क्यों मिली? मैं प्रिंट करा देता हूँ एक बारी। यहाँ पे हमें 10 और 100 मिली, लेकिन इन केस में हमें सेम वैल्यू मिली 22 22। तो जस्ट गिव योर सेल्फ अ कपल ऑफ मिनट्स एंड लेट मी नो, कोई डाउट है तो विल रिपीट, राइट। तो इसके बाद हमारे पास लाइक इन बेसिक जावास्क्रिप्ट चैप्टर, दैट इज आवर फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमारे फॉर लूपिंग रह गया एंड एरेस रह गया। आफ्टर दैट कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम, इज देयर कॉल बाय एड्रेस इन जेएस?
सी दीज आर द टर्म लाइक जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है, कई उनको कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं, कई कॉल बाय एड्रेस भी कहते होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट द मोस्ट स्टैंडर्ड टर्म इज कॉल बाय रेफरेंस। बट या मतलब वो एड्रेस ही शेयर कर रहा है मेमोरी का, हर चीज़ मेमोरी में ही स्टोर होगी, दैट्स प्रीटी श्योर। वेयर इज इक्वल टू 10 का मतलब 10 ने एक मेमोरी ऑक्यूपाई करी और एक को उसका एड्रेस मिल गया, नो डाउट। लेकिन जब बी इज इक्वल टू ए करते हैं तो उसकी कॉपी बना लेता है, कोर मेमोरी लोकेट कर देता है बी को 10 के लिए। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में वो सिर्फ रेफरेंस शेयर करता था कि बहुत सारी कॉपीज ना बन जाए, लाइक एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसमें 100-200 है डाटा है, इतनी ज़्यादा मेमोरी ले रहा है और बी को भी सेम चीज़ चाहिए, तो वो कहता है कि तुम रेफरेंस ले लो, दोनों को हम एक ही पे रेफर करेंगे, अलग से कॉपी नहीं देंगे। अगर तुमको कॉपी बनानी है तो देयर आर वेज इन जावास्क्रिप्ट जिसके थ्रू तुम बना सकते हो, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर तुम यूज़र वन इज इक्वल टू यूज़र टू कर रहे हो तो दोनों को सेम ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिल जाएगा, बेसिकली सेम रेफरेंस मिल जाएगा। तो कॉल बाय एड्रेस इन JS आई हैवंट हर्ड, बट इट कुड बी लाइक सम डेवलपर्स और सम राइटर्स ने कॉल बाय एड्रेस से रेफर कर दिया हो, तो वो होता है कई बार कम्युनिटी में। तो इसके बाद हमारे पास लूपिंग एंड एरेस रह गया, तो हम कल की क्लास में लूपिंग एंड एरेस करेंगे, देन विल टेक लाइक वन और मे बी कपल ऑफ क्लास टू प्रैक्टिस आर ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन बेसिक जावास्क्रिप्ट। तो हम इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के एक असाइनमेंट बनाएंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क देंगे, और इट विल बी लाइक अ प्रैक्टिस सेशन। 1 और 2 क्लास विल बी लाइक जो भी अब तक हमने बेसिक जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है सबके थ्रू अच्छे अच्छे क्वेश्चन होएंगे, जिसके थ्रू तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर कोई कुछ डाउट वगैरह है तो तुम पूछ सकते हो। उसके बाद देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन लाइक आफ्टर 2 और 3 क्लास, राइट। और इसमें कोई और डाउट, शशांक, अमन और बाकी सब लाइक अक्षय, कोई भी मतलब जिसको भी कोई डाउट हो, मतलब आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर फ्यू नेम्स, अमन, अक्षय, भानु एंड बट पार्डन मी, लाइक सबके नेम्स याद करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो किसी को भी डाउट है जस्ट पिंग, और नहीं तो हम थोड़े बहुत एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इट्स 7:12, सो नेक्स्ट टॉपिक पिक करना इज लाइक कि हाफ एन आवर क्लास एक्सटेंड हो जाएगी 8-8:15 तक। Can I use pointer in JS? There is no concept like pointer in JS. So it's in C, and it's slightly similar like call by reference or maybe in pointer, but as such in core or in vanilla JavaScript, original JavaScript, like there is no as such concept of pointers. कई लोग समझाने के लिए बाकी को कि जैसे तुम सी से समझो, सी तुमने सी पहले पढ़ ली एंड देन यू आर कमिंग फ्रॉम सी, तो ताकि तुम्हें थोड़ा रिलेट करा सके या कर दे, मे बी ने पॉइंटर का रेफर कर दिया। लेकिन इफ़ यू रीड अ गुड बुक और समथिंग, एज सच पॉइंटर का कोई कोर कॉन्सेप्ट नहीं है। इट जस्ट होल पिक्चर मूव्स अराउंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स बहुत मतलब बहुत सिंपल भी है और बहुत वास्ट टॉपिक भी है, देन प्रोटोटाइपिंग चेन वगैरह आती है, बट सब कुछ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू चलता है, और ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस है। एरेज क्या है, कॉल बाय रेफरेंस है। और कोई भी प्रिमिटिव डाटा टाइप है, नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड, इट विल बी ऑलवेज कॉल बाय वैल्यू। मतलब सिमिलर तुम सिनेरियो सी वाला पॉइंटर वाला जनरेट कर सकते हो यूजिंग दिस कीवर्ड जो मैंने डिस्कस नहीं किया, और डायनामिक नेचर होती है जिसकी, और कॉल बाय रेफरेंस, इनको मिक्सचर करके यू विल हैव लाइक पॉइंटर वाली फील। So let's see, like free JS is pure object oriented or not? Yeah, it's an object oriented language. Even functions are objects. So in literal terms, in theoretically, yes. But practically we use function, we have classes and whole other stuff. So हम उसमें काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन जब भी जावास्क्रिप्ट रन करता है वो उसको एज अ ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करता है। एक एक चीज़ करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव लाइक लेट्स से फंक्शन ABC, और ये कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब चाहे इसको खाली छोड़ दो, पर फॉर नाउ मैंने कंसोल डॉट लॉग हाई प्रिंट करा दिया। मेरे पास एक टूल था, मैंने आज ही डिस्कस किया, टाइप ऑफ, वो हर एक वेरी किसी का भी टाइप बता देगा। तो अगर मैं इसका टाइप ऑफ प्रिंट कराऊँ, समझो मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, कि जो भी टाइप है
इस एबीसी का, वो मुझे प्रिंट करके दे दो। इस लाइन का मतलब यही है, टाइप ऑफ एबीसी। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये फंक्शन है। अगर अगर इसको मैं अगर और डेप्थ में रीड करूँ कि फंक्शंस कैसे बनते हैं, लाइक, और फंक्शन बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करते हैं, तो तुम बुक्स या फिर जो मैं रिसोर्सेज तुम्हें शेयर करूंगा उसमें देखोगे। तो फंक्शंस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सीन, लाइक वो ऑब्जेक्ट एंडियन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में सब कुछ ऑब्जेक्ट्स के अराउंड ही मूव करता है, राइट। इवन कोई मैं क्लासेस वगैरह प्रिंट करूंगा और कुछ भी करूंगा, तो एक स्ट्रिंग, जब मैं स्ट्रिंग जनरेट करता हूँ ना, इट्स लाइक वो थोड़ा डेप्थ में हो जाएगा फॉर नाउ। लाइक एक स्ट्रिंग और जब बुलियन भी हम जब क्रिएट करते हैं ना, तो उनका एक ऑब्जेक्ट होता है बिहाइंड द सीन, बुलियन नाम का। वो हेल्प करता है हमें जनरेट करने के लिए कि ट्रू फॉल्स वैल्यूज। तुम ऐसे टाइप ऑफ करके किसी का भी चेक कर सकते हो, इट्स लाइक हैंडी टूल। और इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है इसका जावास्क्रिप्ट का। और इन ऑब्जेक्ट लाइक, ओके विल रीड, लाइक हम ES6 लेटेस्ट पढ़ रहे हैं, एक और चीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव लाइक कार। ऑब्जेक्ट्स इजली भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है, या फिर इजीली तुम उसमें कॉड कर सकते हो। इट्स लाइक रियल लाइफ सिनेरियो से तुम इजीली कंपेयर कर पाओगे। लाइक फॉर एग्जांपल कार का तुम क्या करोगे, इसका प्राइस, हॉर्स पावर या मॉडल वगैरह ही करोगे। तो उसको तुम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में एक कोडिंग टर्म्स में, प्रोग्रामिंग टर्म्स में एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कार, जिसका मॉडल है लेट्स से, एक मैंने प्रॉपर्टी बनाई मॉडल। और फॉर एग्जांपल लाइक लेट्स से प्राइस, प्राइस मैंने कुछ भी रख दिया, लाइक इट्स लाइक सम वैल्यू। देन मैंने उसका लाइक नेम या फिर कोई भी मॉडल नेम, इट्स नेम या ब्रांड, ब्रांड लेट्स से इट्स टेस्ला, और कुछ भी कर सकते हो। और अब तुम्हें कहते हैं कार। अब जो ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में तुम्हें इनबिल्ट फंक्शन भी मिलते हैं, ताकि तुम ऑब्जेक्ट्स के साथ इजीली प्ले कर सको या इजीली उनको मैनिपुलेट कर सको। सो फॉर एग्जांपल लाइक एक इनबिल्ट फंक्शन है। अब जैसे मैंने क्या किया था पहले, यूज़र पे एक इंक्रीमेंट फंक्शन बनाया था, और उसको यूज़ करने के लिए मैंने क्या किया था, यूज़र वन डॉट इंक्रीमेंट देन पेरेंथेसिस, राइट। तो ये कार एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक इनबिल्ट फंक्शन है जो हमें दिख नहीं रहा, हमने नहीं बनाया, वो बाय डिफॉल्ट बन के आ जाएगा। फॉर लाइक हैज़, लेट्स ओपन डेव टूल्स, अदरवाइज ये आईडी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया लाइक में सिर्फ एक ही मैंने करा। ठीक है, ये भी जस्ट जस्ट ऑनलाइन आईडी ही है, कंफ्यूज मत होना। मैंने एक क्या लिखे, एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, दैट्स इट, राइट। लेट्स प्रिंट, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं, तो हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, सी। इसको मैंने एक्सपेंड किया तो हमारे पास ब्रांड है टेस्ला, ये हमने खुद डाला है। लेकिन इसके नीचे एक हिडन प्रॉपर्टीज है जो हमें उस आईडी में नहीं दिख रही थी। ये सारे होते हैं इनबिल्ट फंक्शन, टू स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ, हैज़ ऑन प्रॉपर्टी। अब जैसे इसका यूज़ बहुत होता है हैज़ ऑन प्रॉपर्टी का, मैं तुम्हें बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ। अब सिनेरियो है, तुमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें प्राइस और ब्रांड है, राइट। और तुमने एक कंडीशन लिखनी है कुछ से, यस। अब कहीं पे एक सिनेरियो आ गया कि तुम्हें चेक करना है कि जो तुम्हारे पास ये कार ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कोई प्राइस नेम से क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है या नहीं, ये चेक करना है तुम्हें। तो तुम्हें इसके लिए क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन मिलता है, कार डॉट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी। अभी एक मैंने तुमको कहा कि हैज़ ऑन प्रॉपर्टी क्या है, एक फंक्शन है। तो फंक्शन को इन्वॉक करने के लिए तुम्हें ब्रैकेट्स लगानी है, उसके अंदर तुम क्या लिखोगे, उसका प्रॉपर्टी का नेम जो तुम्हें चेक करना है। तो ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि कार के अंदर प्राइस नाम की प्रॉपर्टी है या नहीं। अगर तो उसको मिल जाएगी तो ये पूरा ये जो पूरा फंक्शन है, ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स। ये हम चेक भी कर लेते हैं कंसोल के थ्रू। इसको अभी कमेंट करते हैं एंड वी आर जस्ट सिंपलिंग डूइंग console.log, और इसके अंदर हमने
क्या किया, कार डॉट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी प्राइस, हमने प्रिंट कराने की इसकी कोशिश करी, ट्रू आ गया क्योंकि कार के अंदर ये प्राइस नेम की प्रॉपर्टी है। अगर मैं यहाँ पे रैंडम कुछ लिख दूँ, लेट्स से दिस, अब इस नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो इट शुड रिटर्न फॉल्स, राइट। अब तुम कहोगे कि कार डॉट का मतलब तो है कि हम कार के अंदर रीड कर रहे हैं हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, और हमने तो बनाई नहीं, ये इनबिल्ड है तुम्हारे तुम्हें हेल्प करने के लिए। ऐसे काफ़ी सारी हैं, तो साइड बाय साइड हम इसको भी पढ़ते रहेंगे और कोई भी सिनेरियो आएगा तो हम उसको यूज़ करेंगे। तो अब सिंपल सा सिनेरियो है कि तुमने एक फंक्शन या कुछ भी, तुमने एक पीस ऑफ कोड लिखा जो चेक कर रहा है कि प्राइस की प्रॉपर्टी है तो यस प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो नो प्रिंट कर दो। तो मैंने किया तो ये प्रिंट हो गया यस। अगर मेरे को चेक करना है कोई और प्रॉपर्टी, लेट से एज नाम की प्रॉपर्टी है कार में, तो ये इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा, एल्स में नो है तो ये नो आ गया। एनी डाउट? ओके, तो और जैसे एज ऑन प्रॉपर्टी हो गया, टू लॉकर स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ, ये सारे फंक्शन है इनबिल्ट। हम धीरे धीरे इसको रीड करेंगे जैसे जैसे सिचुएशन आएगी। ओके, सो ठीक है, फिर कल की क्लास में विल स्टार्ट विद looping, and before that we can also pick like this keyword usage, and once we know the use case of this और this keyword होता क्या है, this keyword की वैल्यू कैसे डिफाइन होती है, we can move to the curring function also, and उसके बाद हमारे बच जाएंगे then for loop, while loop, and उसके बाद बेसिक जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा, then we'll pick the next chapter, right? सो किसी को डाउट है तो वो स्टे बैक कर सकते हैं, एंड आई थिंक वी कैन एंड द सेशन और एंड द क्लास, लाइक अदरवाइज 8 मिनट्स में कोई टॉपिक पिक नहीं होगा। तो कल हम प्रॉपरली स्टार्टिंग से नया टॉपिक विद एग्जांपल्स पिक करेंगे, राइट? अटेंडेंस मार्क कर देना सारे, एंड किसी को डाउट है तो ही और शी कैन स्टे बैक, एंड अनम्यूट करके वी कैन हैव अ चैट लाइक कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज विल पिक अ न्यू टॉपिक फ्रॉम, कल की क्लास से नया टॉपिक पिक करेगा, राइट? अगर किसी को डाउट है और उसको चैट में प्रॉब्लम हो रही है तो जस्ट पिंग की लाइक मेरे को डाउट है या अनपिंग अनम्यूट कर दो, आई अनम्यूट हिम और हर, राइट? अटेंडेंस लिंक ऑलरेडी साक्षी मैम ने शेयर कर दिया, अटेंडेंस लिंक आई विल कॉपी एंड पेस्ट अगेन इफ यू वांट, जस्ट अ मिनट, लेट मी सर्च, और यू कैन स्क्रॉल अप, हियर इट इज, राइट?
So guys, okay, अगर कोई डाउट नहीं है तो you guys can leave और मैं कर दूंगा in couple of minutes. But if you have any doubt or if you want to talk, just ping me. I'll unmute you and we'll have a chat. Like कोई doubt वगैरह है तो I can help you. If anyone has like Aman, Anuj, Ayush, Meena, now I can see the name Yabida. If anyone has any doubt, just ping me, right? Otherwise, in 2 minutes, I'm ending the session. Okay, so I think कोई message नहीं आया. So thanks guys, thanks for joining the class, and I'm ending this session. We'll see you tomorrow. Take care. Bye bye.